हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो आपको मिलेगा 17th of August 2026 को। मैं ट्रैवल कर रही हूँ बट मैंने कहा उसके साथ मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपके लिए एक मोनोपोली स्टॉक्स की लिस्ट बना के दूँ, फिर आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उनमें से किसी में भी जबरदस्त ब्रेकआउट आ रहा होगा तो मैं आपके साथ 100% शेयर करूंगी। आज का जो थीम रहेगा वो रहेगा केमिकल सेक्टर, कि इंडिया के जो केमिकल सेक्टर है उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो व्हाट इफ इंडियाज मोस्ट इंटरेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज aren't about cars, chips or defense, but it's about chemicals that nobody is talking about. आपको पता है India is one of the biggest supplier of chemicals after China, right? And think of ingredients like medicines, tires, plastics, cosmetics, food, industrial products. Everything requires chemicals. These companies often have valuable advantages, specialized technology, tough approvals, strong customers, and few competitors. And that is where it gets interesting. One company dominates a regulated pharma input niche. आपको देखो जितने भी pharmaceuticals हैं, they are chemicals, right? जितने भी soaps हैं, shampoos हैं, chemicals. कितनी भी specialized food items में chemicals use होते हैं, तो chemicals are used everywhere. Another holds a major stake of global specialty chemical market, and one has a most unique Indian position. Another replaced imports and turned domestic manufacturing into exports, and some are moving towards higher value chemistry instead of competing only on volumes. The biggest story is that the common thread between all of them is the markets are small, high entry barriers, global customers, right? Chemical sector का जो benefit है वही कि market में भी small, but जो barrier है entry का वो बहुत बड़ा होता है, and there are global customers. That's how an unknown chemical company can become critical to a much bigger supply chain. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 ऐसी केमिकल कंपनीज। लेट मी टॉक अबाउट देम। बट केमिकल सेक्टर का एक बहुत स्पेशल चीज़ है वो ये कि ज़रूरी नहीं कि एक केमिकल कंपनी जो है हजारों केमिकल्स बना रही हो। आप देखोगे एक छोटा सा केमिकल बनाती है और बहुत बड़ी कंपनी उस छोटे से केमिकल के ऊपर ही खड़ी हो जाती है। Here are 7 Indian companies built around this idea. तो पहली कंपनी है निट्टा जिलेटिन इंडिया, makes pharma grade gelatin, ocean and collagen peptides, the stuff behind capsules and nutraceuticals. It calls itself India's largest maker. Its exact market share isn't publicly disclosed, but pharma grade gelatin has a high certification barrier and only a handful of Indian suppliers do it. So this company is Nitta Gelatin India. The second company is Clean Science and Technology, makes specialty chemicals like MEHQ, BHA and Anisole. Its flagship motto is MEHQ, while industry estimates put it global capacity share around 50% to 60%. One of the leaders in MEHQ, BHA and Anisole. इसको डिटेल आप गूगल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मैंने इनके ऊपर बहुत छोटी छोटी रील्स बनाई हुई, how these companies started, what was the reason and how they grew. All of it you can hear on my Instagram or on my YouTube channel. The third company that I'm going to talk about is Vinati Organics, is the global leader in IBB and ATBS, with the companies reporting roughly 65% global market share across these products. Fourth company is Fairchem Organics, makes dimmer acid used in paints, adhesives and coatings. It is India's only manufacturer. Imagine this is a single company which manufactures this product, which is dimmer acid. It's a monopoly stock. When I talk about monopoly stock, आप कौन कौन से नाम लेते हो? Nestle, MCX, ये तो सबको पता है. Fairchem Organic is a monopoly stock in its own space. It is India's only manufacturer, giving its unique domestic position. Although global competitors do exist. पांचवी कंपनी है दीपक नाइट्राइट, is the import substitution story. With around 75 to 80% Indian share in sodium nitrate and strong positions in nitrotoluenes and other performance chemicals. The sixth is AG Ventures, formerly Orient Carbon and Chemicals, makes insoluble sulfur, a critical tire ingredient. It's the sole Indian producer with industry estimate around 10% of global share. And the last one that I'm going to talk, last second one you can say, is Fine Organic Industries, makes 450 plus oleochemical additives used in food, plastics, cosmetics, coatings. It is India's largest and ranks among the top 6 global polymers additive players, serving 75 plus countries.
एक और स्टॉक जो इस लिस्ट में नहीं है वो है नवीन फ्लोरिन, जो कि यूज होता है फॉर पीसीबीज में जो केमिकल यूज होता है उसमें यूज होता है, विद डेटा सेंटर्स, एआई कमिंग अप, पावर, renewable energy, EVs, everywhere electric components are going to be used in massive scale, एंड उस सेक्टर में यूज़ होता है नवीन फ्लोरिन, तो उसको भी आप रेडार पे जरूर रखिए। मैंने इसको बहुत आई बीन रिपीटेडली टेलिंग अबाउट इट, इट्स अ मल्टी बैगर, सो डेफिनेटली हैव इट इन योर पोर्टफोलियो। सो these are the 8 chemicals which are the leaders in their own space. They are different chemicals, different space, but the same idea. They have small product, high entry barriers, powerful position. Which one deserves a full deep dive next? Write it in the comment box. I'll make a full video for you. But in आठों companies में live market में कहाँ breakout आ रहा है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करिए। I will be sharing with you my most premium research absolutely free. The idea is to make India absolutely financially free. So keep learning, keep earning from the market, and do join me for live trading every single day from 10 to 11. My objective is to make India financially free. अभी इंडिपेंडेंस डे गया है, आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई, और अगले इंडिपेंडेंस डे तक आपका रिजॉल्व होना चाहिए कि आप भी फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। ऐसा करना चाहते हैं तो मेरी टीम से बात करिए। वी आर द ओनली पीपल हु टीच यू स्टॉक मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन विद अ वेरी रीजनेबल प्राइस, बट इट्स गोइंग टू बी द ultimate value in your life, in your financial journey. All the best, keep learning. I'll see you in the live market on Tuesday from 10 to 11. Let's become financially free together. Bye bye, all the best.